Hello, dear students. Welcome to our Gulel series, a new topic of human physiology, that is neural control and coordination. So, this control and coordination includes two chapters here. One is the endocrine system and the other is the nervous system. जैसे आप लोग को पहले ही बताया गया है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब when many events are taking place, they need to occur in a synchronized manner. जब बहुत सारी इवेंट्स घटनाएं एक साथ हो रही है तो ये सारे घटना तालमेल में होनी चाहिए। जैसे जब हम एक ऑर्केस्ट्रा देखते हैं तो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं, लेकिन वो लोग एक सिंक्रनाइज मैनर में तालमेल में उसको प्ले करते हैं ताकि म्यूजिक बाहर आए, वरना नॉइज होगा। सो you'll see that in big orchestras there is a person who keeps on giving some signals and the entire band plays according to him, as a result of which what comes out is music and not noise. So similarly, we human beings are multicellular organisms. We have different type of tissues and different type of organs and organ systems. All of them are doing their independent functions. So in order to bring about synchronization in their functions, there has to be some control and coordinating centers. And in human body, this control and coordination is done with the help of the neural system and the endocrine system. The nervous system controls our body tissues with the help of specialized cells which are called as neurons. The neurons control our tissues with the help of electrochemical signals which are called as nerve impulses, which are fast but they are short lived. On the other hand, the endocrine system controls the cells through special chemicals which are called as hormones, which bring about uh, usually a slow response and it is long lived. Okay, there are some exceptions to the slow response, but that will be dealt in the chapter chemical control and coordination. तो दोनों का अपना अपना महत्व है और हम यहाँ पे अभी पहले बात करेंगे न्यूरल सिस्टम के बारे में। न्यूरल सिस्टम जो क्विक रिस्पॉन्सेज देता है, पॉइंट टू पॉइंट रिस्पॉन्सेज देता है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड का माना ये होता है कि you're standing in the middle of the road, suddenly a car comes towards you, you move aside, allow the car to pass. So it's quick and short lived. Whereas increase in your height, development of your secondary sexual characters, these are all long lived responses. So these highly specialized cells of the nervous tissue, which are called as neurons, they detect, they receive, and they transmit the different type of stimulus. So now so if you look at the kingdom Animalia, what we'll observe is that across the kingdom Animalia, it is the coelentrates which for the first time show the presence of primitive neurons, which is called protoneurons. And these protoneurons get connected to each other, resulting in the formation of a nerve net. फिर जैसे जैसे हम लोग हायर हायर फाइलम्स में आते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस में, एस्केहेलमिन्थस में, एनालीडा में, आर्थ्रोपोडा में, तो हमको स्पेशलाइज न्यूरॉन्स दिखना स्टार्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स दिखते हैं, and these neurons get collected to form a group called ganglion. So from Annelida arthropoda, from Ascaleminthus, we see the presence of ganglionated nervous systems, ganglionated along with nerve cords. As we enter into vertebrates,
This becomes highly specialized. And now we observe the presence of the brain and the spinal cord. So, in the case of human beings, we have a well developed nervous system. And our nervous system is divided into two main divisions, the central nervous system and the peripheral nervous system. The central nervous system, as the name suggests, is along the central line of the body. The central nervous system is dorsal, and this is a chordate feature. Our circulatory system is ventral, आगे की तरफ, whereas the nervous system, central nervous system, is dorsal. So it is called central nervous system because it lies along the central axis of the body. और वो इस एतबार से भी सेंट्रल है कि just like a computer has got a central processing unit, the central nervous system also functions as a CPU of our body. The job of the central nervous system is receive the impulses, analyze them, interpret them, evaluate them, समझो उसको, एंड जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करो, मेमोरी बनाओ, ताकि नेक्स्ट टाइम उस मेमोरी के बेस के ऊपर आप responses दे सको. And in order to help in these functions, the central nervous system shows the presence of two important organs, that is the brain and the spinal cord. So the central nervous system shows the presence of the brain and the spinal cord. These are the two parts of the human CNS. Further, the second part, that is the peripheral nervous system. Okay. Now, जैसे brain and spinal cord is along the central axis, organs तो आजू बाजू में सब जगह पे है. So information should come from the organs to the CNS and from the CNS to the organs. So you will require nerves which will carry this information. Okay. And all these nerves, nerve fibers, along with their ganglions, which are carrying the information from the organs to the CNS and from the CNS to the organs, together constitutes a division which is called as the peripheral nervous system. So peripheral nervous system में वो सारे nerves, सारे ganglions, सारे neurons आते हैं जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं ऑर्गन से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन्स की तरफ. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो नर्व फाइबर्स, वो न्यूरॉन्स और वो गैंग्लियंस जो मोटर इंपल्सेस कैरी करते हैं टुवर्ड्स योर वॉलंटरी मसल्स, तो हम उसको कहते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. और वो मोटर न्यूरॉन्स जो आपके इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. क्योंकि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम अपेरेंटली ऐसे लगता है कि वो स्वावलंबी है, लेकिन वो इनडायरेक्टली सीएनएस से ही कंट्रोल होता है. लेकिन जब उसका डिस्कवरी हुआ था तब इनके गैंग्लियंस का कनेक्शन सीएनएस से नहीं मिला था, इसलिए उसका जो नाम पड़ गया ऑटोनॉमस वो वैसा ही है. तो ऑटोनॉमस को ऐसे समझा जाता है कि ये इंडिपेंडेंटली काम करता है. इंडिपेंडेंटली यहाँ पे मतलब है इनवॉलेंटरीली, इनडायरेक्टली ये कंट्रोल्ड है थ्रू द सीएनएस. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को एक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है, फाइट एंड फ्लाइट के लिए, इज कॉल्ड द सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम. एंड वो डिवीजन व्हिच हेल्प्स यू टू रेस्ट एंड डाइजेस्ट is called as the parasympathetic neural system. So autonomous nervous system consists of two divisions, sympathetic and parasympathetic. Please note that both, these somatic and autonomic, are the motor neural systems.
where the signals from the brain and spinal cord are either going to your voluntary muscles or towards the involuntary organs. Another division of the peripheral nervous system is the sensory division, which carries sensory information from these organs towards the peripheral nervous system. So the peripheral nervous system includes both sensory as well as motor divisions, and the motor divisions include the somatic neural and the autonomic neural. Okay. अब within the body, there are certain organs which are called visceral organs or the viscera, like say the urinary bladder. Now the urinary bladder will send the signals to the CNS, and from the CNS will receive the commands. And let us assume that these are involuntary signals. Okay, they cannot be manipulated by your will. तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो डिवीजन है जो दोनों है, सेंसरी भी है और मोटर भी है, और वो कंट्रोल कर रहा है आपके विसरा को, विसरल ऑर्गन्स को. इसलिए एनसीईआरटी कहता है that the visceral nervous system is a division of the peripheral nervous system which includes neurons, nerves, ganglions, which carry information from the viscera to the CNS and from the CNS to the viscera. Take the example of your gut, take the example of your urinary bladder, and understand the visceral nervous system, where the signals are sent from the gut and the urinary bladder to your CNS, and then the CNS gives the command to the viscera, which is not controlled by your will. तो ये हो गए अलग अलग डिविजन्स हमारे न्यूरल सिस्टम के. अब the neural system is made up of neurons, and the neurons form the nerve fibers. Now there are two types of nerve fibers: those which carry information from the organs to the CNS are called afferent, and those which transmit the signals from the CNS to the organs are called efferent. Afferent को हम सेंसरी और efferent को हम मोटर भी बोलते हैं. कभी कभी लिटरेचर में एक तीसरा टाइप भी मेंशन किया जाता है जिसको हम एसोसिएशन नर्व फाइबर्स बोलते हैं. ये वो नर्व फाइबर्स है जो ब्रेन के अंदर है, या वो नर्व फाइबर्स है जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, और ये सेंसरी दैट इज एफरेंट नर्व फाइबर्स एंड मोटर दैट इज इफरेंट नर्व फाइबर्स को कनेक्ट करते हैं. तो ये बात हो गई हमारे अलग अलग टाइप के नर्व फाइबर्स की. वी हैव डिस्कस द सोमैटिक, ऑटोनॉमिक and the different type of neural system. Now here, dear friends, before we talk about the conduction of the nerve impulse, we need to quickly recap the neuron as the structural and functional unit of the nervous system. So the diagram that is there in front of you is that of a neuron. Okay. So if you remember our lectures, I have always told you this, that the neuron is a cell which is specialized to conduct the signals, nerve impulses, या फिर दूसरे शब्दों में depolarizations. तो once upon a time there was a cell, a normal cell, और उसको बनना था न्यूरॉन. तो उसको नर्व इंपल्स कंडक्ट करने के लिए नॉर्मल सेल होके फायदा नहीं है, तो हमने उसके सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड किया, अलग अलग तरीके से.
So these are the cytoplasmic extensions. And these cytoplasmic extensions are called neurites. The smaller ones are called dendrites. Single long one is called as an axon. और जो बच गया सेंटर में, that is the cell body or the cyton. So the cell body is the cyton of the neuron. We can call it as the controlling part of the neuron because it shows the presence of a nucleus along with the cytoplasm. The cytoplasm is called as the neuroplasm. We see the presence of RNA rich granules around the nucleus. Okay, these are darkly stained and they are called as Nissel's granules. Nissel's granules, which are seen in the cell body as well as in the dendrites, but not in the axon. Between the dendrites and the axon, the dendrites are shorter and highly branched fibers, and they carry the signals towards the cyton, whereas the axon carries the signals away from the cyton. The membrane of the axon is called as the exolemma. Inside, it has got abundant cytoplasm, which is called as the exoplasm. The axon, towards the end, shows branches, which are called as the axon terminal telodendria, and they show the presence of the synaptic knobs. They show the presence of the synaptic knobs, which show the presence of the synaptic vesicles. Inside the vesicles, there are specialized chemicals, which are called as the neurotransmitters, which will help to conduct the impulses from one neuron to another neuron via the synapse. That is what we're going to see later on. The axon, the exolemma, may show the presence of a fatty tissue, which is called as the myelin sheath. So if I say that this is the axon with its exolemma, it can get covered by a fatty tissue, which is called as the myelin sheath. And this myelin sheath is not continuous. It shows the presence of some gaps, which are called as the nodes of Ranvier. Enclosing this will be a membrane that is called the neurilemma with its cell, a neuroglia cell, which is called as the Schwann cell. Okay, the neurilemma enclosing the Schwann cell. So now the neurite, that the axon diameter has become thicker, that is called as a nerve fiber. It shows the presence of a myelin sheath. It shows the presence of a myelin sheath. So it will be called as a myelinated or a medullary nerve fiber. यही अगर माइलिन शीट एब्सेंट है लेकिन न्यूरिलेमा वगैरह सब है, हम उसको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलरी नर्व फाइबर. Now, depending upon the number of neurites, the neuron structurally can be classified into a unipolar, a bipolar, and a multipolar neuron.
The unipolar neurons shows the presence of a single neurite. Okay, and such unipolar neurons are seen in the embryonic stages. The bipolar neurons have two neurites, one dendrite, the other axon. These are seen in the retina. And most of your central nervous system shows the presence of multipolar neurons, जिसका डायग्राम हम लोगों ने इसके पहले देखा था. In order to understand the generation and the conduction of impulses, okay, dear students, first of all, know that neurons are excitable cells because they are in a polarized state. Neurons are excitable cells because they are in a polarized state. Say, for example, in the society, let us assume that there are two poles, one very rich people and the other very poor people. So now already the society is polarized into two types of people, highly rich and highly poor. Now a person comes and goes to the poor people and gives a speech against the rich people and incites them to do some violence against the rich people. चूंकि सोसाइटी पहले से ही पोलराइज थी, अब ये जो पुअर पीपल है एक्साइट हो गए और उन्होंने वायलेंस कर दिया रिच के अगेंस्ट. तो हम ऐसा कहेंगे, बिकॉज द सोसाइटी वॉज इन अ पोलराइज स्टेट, it was easy to excite it. So it is excitable society because it was in a polarized state. Similarly, the neurons are also in a polarized state. So it is easy to excite it. So neurons are excitable cells which are in a polarized state. Now, what is this polarized state and what is the excitable nature of the neuron is what we are going to understand. But in short, polarized state मतलब कि जो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसमें चार्जेस की पोलैरिटी होती है. ओके, देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. नाउ this is the exolemma of the neuron. It shows the presence of different types of ion channels, leakage channels, then gated channels, which can be ligand gated, voltage gated, ऐसे अलग अलग channels होते हैं. We'll not be going into the details of all these channels because they're not there in the NCERT, not needed here. To make it a synopsis, let us say that exolemma के ऊपर ये मैंने कुछ चैनल्स बनाए, ब्लैक एंड रेड कलर के. इनके ऊपर मैंने कोई भी गेट नहीं बनाया. गेट मतलब ऐसा कोई गेट नहीं बनाया. सो ऐसे चैनल्स जिसके ऊपर हमने कोई गेट नहीं बनाया उसको हम कहेंगे ये लीकेज चैनल्स. ये जो ब्लैक वाले मैंने बनाए हैं, लेट मी कॉल देम एज पोटेशियम लीकेज चैनल्स. और जो रेड में मैंने बनाया, let me call them as sodium leakage channels. So I have made two types of leakage channels. The black ones are the potassium leakage channels and the red ones are the sodium leakage channels.
Now, as you can see from my diagram, that the exolemma has more number of potassium leakage channels as compared to the sodium leakage channels. And these potassium leakage channels are much more leakier than the sodium leakage channels. मतलब एक्सोलेमा के ऊपर जो पोटेशियम के लीकेज चैनल्स है उनका नंबर भी ज्यादा है और वो ज्यादा लीक करते हैं सोडियम पोटेशियम को, वेरा सोडियम के लीकेज चैनल्स कम है और लीकियर भी कम। इसलिए एनसीईआरटी कहता है that the exolemma is nearly impermeable to sodium, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एक्सोप्लाज्म के अंदर there will be more amount of K plus and बाहर there will be more amount of Na plus in the extracellular fluid. So can we agree with the NCERT line that exolemma is nearly impermeable to sodium and more permeable to potassium, and it is selectively permeable to the ions. अब जब हमने कहा मोर सोडियम एंड मोर पोटेशियम तो उसको और समझते हैं कि अंदर अगर मैं कहूं कि 10 पोटेशियम है तो बाहर 1 पोटेशियम, मतलब अंदर पोटेशियम ज्यादा बाहर पोटेशियम कम। अंदर अगर 1 सोडियम है तो बाहर 30 सोडियम, मतलब बाहर सोडियम ज्यादा अंदर सोडियम कम। बट बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं कि बाहर का सोडियम अंदर के पोटेशियम को आउट नंबर कर देता है, जिसकी वजह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी आ गई और अंदर आ गया इलेक्ट्रो नेगेटिव, as a result of which the exolemma becomes polarized. Outside it is electro positive, inside it is electro negative. Such a state is called as the polarized state of the exolemma, and the leakage channels create this polarized state. And the intracellular fluid exoplasm shows on an average charge of minus 70 millivolts. That is called as the RMP or the resting membrane potential. इसी को कहते हैं RMP or the resting membrane potential. So when I say that the neuron is in a polarized state, I mean that the exolemma is in a polarized state. Outside it is electropositive, inside it is electronegative. Electronegativity inside is almost minus 70 millivolts. And the main reason to create this are the leakage channels. The leakage channels of potassium are much more and they are more leakier than the sodium channels. इसकी वजह से अंदर पोटेशियम ज्यादा बाहर सोडियम ज्यादा, लेकिन बाहर का सोडियम अंदर के पोटेशियम से कई गुना ज्यादा, जिसकी वजह से बाहर डेवलप होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और अंदर डेवलप होगा इलेक्ट्रो नेगेटिव, एंड दिस इज द मेन रीजन of it becoming polarized. Now, the ions will have a tendency to move from their higher concentration to lower concentration. So, sodium will have a tendency to come in, and potassium will have a tendency to go out. And if that happens, our RMP resting membrane potential will get disturbed.
We don't want that. So there are certain proteins on the exolemma which are called as the sodium potassium pump. It's an active pump. So when I say it's an active pump, so definitely it is going to use ATP. When I say it's an active pump, definitely it is going to work against the gradient. And this pump pumps out, it pumps out the K, it pumps out 3Na plus and it takes in 2K plus. So is this pump working along the gradient or against the gradient? It is working against the gradient. Okay. So the sodium potassium pump is working against the gradient. So what is this sodium potassium pump doing? It is maintaining the RMP, that is the resting membrane potential. The third thing is that inside there are some negatively charged proteins which don't go out. The exolemma is not permeable to them, as a result of which under there will be electronegative, outside there will be electropositive. So ये तीन reasons है for the RMP, that is the resting membrane potential. What are the three reasons? Number one, there are leakage channels. There are leakage channels of potassium and leakage channels of sodium. The potassium leakage channels are much more and they're much more leakier than the sodium leakage channels. इसलिए एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम ज्यादा है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा है, लेकिन बाहर का सोडियम अंदर के पोटेशियम से कई गुना ज्यादा है, इसलिए बाहर आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अंदर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये आरएमपी -70 मिलीवोल्ट्स की है। इसको मेंटेन करने के लिए हमको लगते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप, जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा जाके 3 सोडियम को बाहर पंप करते हैं, अंदर 2K+ को लेते हैं। तीसरा रीजन है कि निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को बाहर जाने नहीं दिया जाता। और ये तीनों रीजंस के वजह से आप देखोगे कि आपका जो न्यूरॉन जो है, जो स्टिम्युलेटेड नहीं है, रेस्टिंग स्टेज में है, उसकी एक पोलैरिटी है, बाहर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, अंदर इलेक्ट्रो नेगेटिव है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल और द न्यूरॉन एट रेस्ट विथ एन आरएमपी ऑफ अबाउट -70 मिली वोल्ट्स। तो इसी की ये समरी है बच्चों। Then the next stage is the action potential. The next stage is the action potential. An action potential, in short, okay, will be understood like this. That, as now we are very clear, that outside electropositive है, अंदर electronegative है. I'll be keeping it in brief, dear students. The details can always be found in our class notes. Imagine करो, एक stimulus hit किया on the exolemma. As the stimulus hits the exolemma, voltage gated channels of potassium open. Voltage gated channels of, I'm sorry, sodium open. Okay, once again listen. As the stimulus hits the exolemma, the voltage gated channels of sodium open. And as the voltage gated of sodium channels open,
जुप करके बाहर से बहुत सारा सोडियम थोड़ी देर के लिए अंदर आया. And as soon as that occurs, what happens is, see this. And inside there will be electropositive, outside there will be electronegative. And inside ka value will reach almost plus 30 millivolts. And that will be called as the depolarized state of the exolemma. So whenever the stimulus hits the exolemma, it is the action potential that is generated that causes the depolarization, or this action potential is the depolarized state. कि जैसे स्टिमुलस हिट किया एक्सोलेम्मा पे, एक्सोलेम्मा के सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल गए, जिसकी वजह से बहुत सारा सोडियम जुप करके अंदर आया थ्रू द वीजीसी. अंदर की एक्सोप्लाज्म बन गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बाहर बन गया इलेक्ट्रो नेगेटिव. जो आरएमपी -70 मिली वोल्ट्स की थी वो अभी हो गई +30 मिली वोल्ट्स. ओके, यहाँ पे थ्रेशोल्ड वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स. तो इसको हम बोलते हैं डीपोलराइज स्टेट. एनसीईआरटी सेज दैट the stimulus driven permeability to sodium is short lived. मतलब और सोडियम अंदर आने वाला नहीं है. बाय द टाइम इट रीचेस +30 मिलीवोल्ट्स, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल शट हो जाते हैं. मतलब और सोडियम अंदर आने वाला नहीं है. मतलब +30 मिलीवोल्ट्स ड्रैग होके +100 मिलीवोल्ट्स होने वाला नहीं है. Okay, so the NCRT line says that this permeability to sodium ions is very short-lived, meaning as you reach +30 millivolts, these are average values from Guided Book of Medicine. As you reach the +30 millivolts, voltage gated channels of sodium will close और सोडियम अंदर नहीं आएगा. तो अब देखते हैं कि रीपोलराइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. रीपोलराइजेशन मतलब फिर से हमको वही पोलैरिटी वापस लानी है. तो नाउ इन द थर्ड स्टेज, the voltage gated channels of potassium will open and there'll be efflux of K plus ions which are carrying the positive charge. So that K plus goes out, takes out the positivity of it. As a result of which outside becomes electropositive, inside becomes electronegative. And now we say that it has gone back to its original polarity, that is repolarized. But ionic concentration needs to be balanced. So depolarization state में जो सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो गया था वो अब चालू होगा. फिर से बाहर सोडियम ज्यादा होगा, अंदर होगा पोटेशियम. So ये the third stage. Who is responsible for the repolarization? तो आंसर आएगा efflux of K plus ions. Who is responsible for depolarization? The influx of sodium ions. And who is responsible for repolarization? The voltage gated channels of potassium open. Potassium goes back and the polarity is brought back to normal. But does the ionic exchange become normal? No. Gradually, then it will be taken over and brought normal by the sodium potassium pump. Okay, इसमें एक और स्टेज आता है which is called as the hypertonic state, but you are advised to study that in your medicine. So अगर हम लोग if we summarize the thing, then we have got a polarized state, depolarized state, and a repolarized state.
राइट? ये तीन स्टेट्स हैं. Let me write it and you will learn what I am writing, dear students. This will be a quick summary and it will make your life very easy. Polarized, depolarized and repolarized. अगर आप इतना याद रखते हो तो आपका काफी सारे एमसीक्यूज इसमें सॉल्व हो जाते हैं. That is, what about the leakage channels? Sodium, potassium pump, voltage gated channels of sodium, voltage gated channels of potassium, and the polarity inside. So देखो ये लीकेज चैनल्स है, इनमें कोई गेट नहीं है. ड्यूरिंग द पोलराइज स्टेट ये लीकेज चैनल्स ओपन है, सोडियम पोटेशियम पंप चालू है. वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऑफ सोडियम भी बंद है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऑफ पोटेशियम भी बंद है. पोलैरिटी में इनसाइड इज इन की बात कर रहा हूं, इज पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव. एक ही याद रखते हैं तो दूसरा उसका अपोजिट होगा. अगर इन मैंने पॉजिटिव रहेगा तो बाहर नेगेटिव होगा, राइट? तो इनसाइड इज इलेक्ट्रो नेगेटिव, आउटसाइड इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव. फिर आ गया डीपोलराइज स्टेट. तो क्या होगा लीकेज चैनल्स का? ये लीकेज चैनल्स इनके पास कोई गेट नहीं है तो ये हमेशा ओपन ही रहने वाला है. थोड़ी देर के लिए पंप बंद होगा. वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऑफ सोडियम खुल चुके हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऑफ पोटेशियम अभी भी बंद है. अंदर जो है वो पॉजिटिव हो गया. क्यों? बिकॉज ऑफ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम. अब आते हैं हम लोग रिपोलराइज की तरफ. लीकेज चैनल्स हमेशा खुले रहेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप फिर से चालू होगा. वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऑफ सोडियम बंद है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऑफ पोटेशियम खुल चुके हैं. अंदर फिर से नेगेटिव हो गया. क्यों सर? देर इज एन ई फ्लक्स ऑफ K प्लस. इफ यू रिमेंबर दिस चार्ट, आई गारंटी यू कि इसके रिलेटेड जो मैक्सिमम सीक्यूज है वो इसी के अंदर आपके कवर हो जाएंगे. इफ यू conceptually understood it, make it a priority, you learn this chart and most of your questions will be solved. Okay, now this is the exolemma. Outside electro positive, inside electro negative. पहले स्टेज में इम्पल्स आया, अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर हो गया नेगेटिव, तो हम बोलेंगे डीपोलाइज है या एक्शन पोटेंशियल है. ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके वजह से नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा हो जाएगा कि पहला वाला विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोलैरिटी, आप बोलोगे रिपोलराइज्ड होगी, एंड द नेक्स्ट लॉट विल बिकम depolarized. In the next diagram, charges exchange होंगे and the depolarization will seem to go forward. So can I say there is a wave of depolarization moving along the exolemma, and that is called as the action potential or the nerve impulse. The wave of depolarization along the exolemma is called as the nerve impulse. That was about the nerve impulses. Now, as you are aware that it is
an axon dendron connection in the nervous system. An axon come close to the dendron, does not touch it. It leaves a gap, and that is called as a synapse. Okay. There are two types of synapses. One which require chemicals called neurotransmitter to transmit the impulses from the axon to the dendron are called as chemical synapses. The other are electrical synapses, where there are gap junctions between the axon membrane and the dendron membrane. So the impulses directly flow from the axon to the dendron as if it is a single membrane. And this are called as electrical synapses. They are unregulated, and that is why they are very rare in our system. So even though they are fast, they are unregulated. The regulatory synapses, they are the chemical synapses. So in an electrical synapse, the post and the presynaptic membrane, presynaptic is the axonal membrane, postsynaptic is the dendronal membrane usually. These are in very close proximity and there are gap junctions between them. तो उनको किसी केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती इम्पल्स को आगे ट्रांसमिट करने के लिए. It behaves as a single membrane and passes on the impulses via those gap junctions. But in a chemical synapse, as you can see, this, I'm highlighting it, is the, I'm sorry, this is a presynaptic membrane. This one is the presynaptic membrane, axonal membrane. This one is the postsynaptic membrane, that is the dendronal membrane. और बीच में गैप होगा, उसको हम कहेंगे synaptic cleft. And inside the axonal knob, the presynaptic membrane, there are synaptic vesicles with neurotransmitters. जैसी इंपल्स रीच करता है इस प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, इस प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अंदर कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है जो इस साइनेप्टिक वेसिकल्स को प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज कर देता है, जिसके वजह से अंदर का न्यूरो ट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है, जो इस डायग्राम में दिखाया हुआ है. अब ये न्यूरो बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स के ऊपर जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे. जैसे ये रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की सोडियम चैनल्स खुल जाती है, ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होता है, and the postsynaptic membrane gets depolarized. So the depolarization moves from the presynaptic to the postsynaptic via the neurotransmitter, hence it's a chemical synapse. So if you take example of acetylcholine, you will have acetylcholine which is released over here, then there will be acetylcholine receptors on the membrane. The acetylcholine will fill the synaptic cleft, impulse transmit होगा. उसके बाद एक्सॉन नॉब एक एंजाइम रिलीज करता है कोलिन इस्टरेज, जो एसिटाइल कोलिन को रिमूव करता है, साइनअप्स फिर से वापस आ जाता है. क्यों? ताकि देयर विल बी ओनली वन वे कंडक्शन ऑफ द impulses, only from the axon to the dendron, never from the dendron to the axon. So these are the point wise summary of what I just said. So please go through it. And the last line in this text about conduction of the impulses, that the neurotransmitters are either excitatory or they are inhibitory. Okay, excitatory neurotransmitters are those which will excite the next neuron. Inhibitory वो होंगे जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के फायरिंग को बंद करेंगे. The examples of excitatory and inhibitory are not given in the NCERT, so I suggest you not to learn these examples. If you remember in the classroom, for inhibitory, I have given you an example of GABA, GABA.
And for excitatory, it can be acetylcholine, epinephrine, dopamine, serotonin. Okay. अब यहाँ पे उसको इनिबिटरी में भी दिया गया एसिटाइल एपिनेफ्रिन, क्योंकि वो ग्रेटली डिपेंड करता है कि कौन से टिश्यू पे वो एक्ट कर रहा है और कौन सी नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व है। जैसे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर एसिटाइल कोलिन है तो वो इनिबिटरी का काम करेगा। सो लेट्स नॉट गो इनटू दिस इंट्रिकेट डिटेल्स। आप इतना ध्यान रखिए कि न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के फायरिंग को बंद करेगा तो एक्स तो इनिबिटरी है, अगर उसकी वजह से फायरिंग होगी तो वो एक्साइटेटरी है। एंड यू कैन ऑलवेज रिमेंबर द क्लासरूम का एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन यू अबाउट पिंचिंग ऑफ योर फिंगर, पेन जाना, फिर गाबा का रिलीज होना उस पेन को कम कर। So that was about neurons and the conduction of impulses. So the next topic would be the human brain.